Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. You're just scrolling through your social media feed, all right? Maybe looking at some funny stuff, pictures from friends, you know how it is. And then suddenly there's an ad. And it's right next to a post about something pretty serious, like maybe a natural disaster. Let's say a travel ad for a place that's just had terrible floods. It feels jarring, doesn't it? It makes you feel a bit uncomfortable, maybe. And for the brands, that's a massive problem, a problem they often can't really control or sometimes even see happening in the chaos of a real feed. So it makes you wonder, how on earth do researchers study these subtle but really powerful effects when the platforms are so complicated and changing all the time? Yeah, that's exactly the kind of thorny challenge researchers are diving into. And today we're actually going to explore a really significant step forward in understanding how we experience content online. What we're discussing today is based on a fantastic, rigorous article. It's called DICE-E, Advancing Social Media Research Through Digital In-Context Experiments. And it was published in the Journal of Marketing, which, is a top-tier journal. It's recognized in the FT50 and UTD-24 listings, so it's really high-impact work. Impressive. And who are the minds behind this? The authors are Roggenkamp, who's a research associate and PhD candidate at the University of St. Gallen in Switzerland. Then there's Johannes Bogershausen, an assistant professor of marketing at Erasmus University Rotterdam in the Netherlands. And Christian Hildebrand, a full professor of marketing analytics, also at the University of St. Gallen. A really strong team. Okay. And for anyone listening, maybe someone just starting out in research, or even if you're just really curious about how this digital world works. Absolutely. We really, really encourage you to read the actual paper. It's so thoughtfully put together, rigorously peer-reviewed. We can only cover so much here, obviously. But the article itself, it's packed with detail. It's just a great example of clear, impactful academic writing. And we'll make sure the link to the full paper is right there in our show notes for you. So let's get into it. Social media is constantly shifting, getting more complex. How has the research actually kept up with all that change? Well, that's the interesting part. You'd think research methods would have evolved dramatically too, right? But for about the last 10 years, the main ways marketing scholars study how you behave on social media have stayed surprisingly, consistent. Even while the platforms themselves became these super sophisticated, algorithm-driven environments with billions of users. Really? A whole decade. So there's been a bit of a lag, maybe? You could say that. There's been a bit of a gap between the research tools and the reality of using these platforms. Okay, so what were those main tools and what were the downsides? All right, so researchers mainly use three kinds of approaches. First, you have what are called vignette-based experiments. Now, these are good because they give the researcher lots of control. You can really isolate one specific thing you want to test. Okay. Control sounds good. It is, but the problem is they often use really simplified stuff, like they might just show you a static screenshot of one single post. And that just isn't how you use social media, is it? You scroll, things fly past, posts compete for your attention. Yeah, it's a whole stream of content. Exactly. So showing just one post, it's like looking at one tree and trying to understand the whole forest. It can even make some effects seem bigger than they really are in the wild, so to speak. The realism just isn't quite there. Okay, so high control, but maybe not so realistic. What else? You mentioned studies on the platforms themselves. That's the second big one. Online platform studies. Think A/B testing, happening right there on Facebook or Instagram. These are great for realism, obviously. It's measuring your actual behavior in the actual environment. Sounds ideal then. Well, yes and no. The trade-off is you lose a lot of control as a researcher. The platform algorithms, which are often total black boxes, we can't really see inside them. They can mess with the results. They might change who sees what, maybe based on who they think will react, and that makes it super hard to know if the thing the researcher changed is really what caused the behavior you see. So the algorithm gets in the way of knowing the true cause and effect. Precisely. And the platforms might be running their own tests at the same time, which can interfere without the researcher even knowing. Okay, so that's tricky. High realism, but you sacrifice control and clarity. What was the third method? The third is observational studies. This is where researchers basically scrape existing data from the platforms, looking at what's already happened. This is good for seeing natural behavior, what people actually do online. But I sense another but coming. You guessed it. Again, those opaque algorithms are a problem. They influence what data researchers can even get, and they definitely influence what you see on your screen.
So there are big questions about how valid the findings really are. It's tough to get data on individuals, and you're mostly looking at correlations, things happening together, not necessarily proving that one thing caused another. So it really feels like researchers were stuck between a rock and a hard place. Either you get the control you need for good science, but it doesn't feel real, or you get the real world setting, but you can't be sure what's actually causing what you observe. That's a tough spot. That's exactly the dilemma. And this is precisely where DICE-E comes in. Digital in-context experiments. It's a new approach, a new experimental paradigm designed specifically to bridge that gap, to give you sort of the best of both worlds. DIC. Okay, so break that down. What does it actually do differently? How does it tackle this trade-off? So DICE lets researchers build these really quite realistic social media feeds. They look and feel very much like the platforms you use every day. The key thing is they present the posts within scrollable feeds. It's not just static images. So it mimics the actual scrolling experience. Exactly. That's much, much closer to your everyday reality online compared to just showing a single screenshot. It shifts the focus to the whole dynamic environment. That sounds like a pretty big step up for realism. What are the main advantages, the key contributions here? Okay, there are a few big ones. First, as you said, it massively boosts the ecological validity. That's the fancy term for how much the research setting actually mirrors the real world. But, and this is crucial, it does that while still giving researchers high experimental control. They can still precisely change specific things to see what effect they have. So holding on to that scientific rigor. Absolutely. Yeah. Second, it allows researchers to systematically manipulate the entire feed, not just one post, but the whole context. This is huge for studying things like how different posts influence each other, those spillover effects, like seeing an ad next to certain news or near a competitor's post. Right, the context matters. It really does. And here's something super interesting. DICE can track post-level dwell times. Dwell time? What exactly is that? It's basically how long each individual post is actually visible on your screen as you scroll. We're talking down to the millisecond. It gives researchers a really good, unobtrusive way to estimate your attention to each piece of content. Something academic researchers usually can't get access to, though the platforms themselves use similar data all the time. Wow, okay. Tracking attention at that level sounds incredibly useful. But how easy is this for researchers to actually use? Does it require, intense coding skills? And what's it like if I'm a participant in one of these studies? That's a great question. And a major part of DICE is the technology they've built. They provide an open source app. You can find it at dice-app.org. And crucially, it comes with a no-code web configurator. No code, so you don't need to be a programmer. Exactly. It means researchers without deep technical expertise can still design and run these sophisticated experiments. That lowers the barrier significantly. Less time, less cost, easier learning curve. It's built on common tools too, so it's flexible. Okay, that's huge for accessibility. And for me, the participant, what would I see? From your end, it's designed to feel very natural. You typically participate on your own device, phone, tablet, computer, whatever. You'd open the study and see a simulated social media feed. It looks very familiar. Profile pics, usernames, sponsored labels on the ads, maybe even like buttons. You just scroll through it naturally, like you would on Instagram or X or whatever platform you use. Then usually after you've browsed for a bit, you'd be sent to a standard survey to answer some questions about your experience or attitudes. Then back to wherever you were recruited from. So it feels pretty normal just scrolling a feed. And behind the scenes, the app is tracking things. Yes, unobtrusively. The most important piece of data, as we mentioned, is that dwell time. It knows precisely when each post entered your screen view and when it leaves, recording the duration down to the millisecond. How does it do that? It tracks what are called viewport events. Basically, it registers the moment any part of a post becomes visible on your screen and the moment it's completely gone. This gives researchers incredibly detailed data on your scrolling behavior and how long you lingered on specific posts. Then, they can link that behavioral data, what you actually did with your survey answers what you said. That combination gives a much, much richer understanding. It really paints a fuller picture. Okay, to make this even clearer, the paper includes a couple of case studies. Let's walk through those. Case study 1 versus 1 tackled brand safety, right? Advertising next to bad stuff. Exactly. A huge concern for brands, as we talked about. It's something really hard, almost impossible, to test safely in the real world. You don't want to actually run your ad next to harmful content if you can avoid it. So DICE provides that safe space to test it. How did they set it up? Okay, so they created 2 different feeds. In both feeds, there was the exact same ad for KLM Airlines, advertising flights to Brazil.
The crucial difference was the posts around that KLM ad. In one version, the brand safe one, the ad was surrounded by neutral posts about Brazil. Think nice scenery, cultural stuff. In the other version, the brand unsafe one, the ad was surrounded by posts talking about severe flooding happening in Brazil at the time. Pretty negative context. Okay, same ad, different neighbors. Right. The KLM ad was always the fifth post down, but the order of the other posts around it was randomized. They got almost 1,000 people to browse one of these feeds, and then they measured how participants felt about the KLM brand afterwards. And the results, what do they find? Well, first, pretty clearly, people's attitudes towards KLM were significantly less positive when they saw the ad in the brand unsafe context next to the flood news. That confirms the basic brand safety concern. Makes sense. But here's the really neat part, thanks to the dwell time data. That negative impact, it was much, much stronger for participants who spent more time looking at the KLM ad itself. If you just quickly scrolled past the ad, barely glanced at it, the negative context had a much smaller effect on your attitude towards the brand. Whoa, okay, so it's not just that the ad was there next to the bad news, it's how much attention you actually paid to the ad in that moment. Your attention level kind of dials the negative effect up or down. Precisely. It highlights that attentive exposure is key. It adds a really important layer of understanding for brands worried about context. That's fascinating. And the second study, you said it looked more at attention in a really crowded feed. Yes. Case study 2 focused on attention and brand recall when multiple ads are competing in a busy feed, which, let's face it, is the normal state of affairs on social media. They wanted to know, does the position of an ad in the feed matter for whether you remember seeing it? And again, how does attention, measured by dwell time, fit into that picture? Okay, so how did they simulate that competitive environment? They created a feed with 35 organic posts. Mostly fun stuff, like internet memes mixed in with 5 sponsored ads. These are real ads for well-known electronics brands. Apple, Bose, Nintendo, Samsung, and Whoop. They grabbed them from Facebook's ad library. And here's the key. The order of all 40 posts, the 35 memes and 5 ads, was completely randomized for every single participant. So everyone saw the ads in different positions. They had 300 younger participants do this, and afterwards they tested which of the advertised brands they could recall seeing. Right, so a real jumble, much like my own feed sometimes. What came out of that? Especially when they looked at the dwell time. So initially, if you just looked at the ad's position, there seemed to be a primacy effect. Ads that showed up earlier, higher in the feed, were indeed recalled more often. That finding pops up a lot in research. First impressions matter, maybe? Makes intuitive sense. But then they brought in the dwell time data. How long did people actually look at each ad? And once they factored that in, the effect of the ad's position on whether you remembered it, it basically vanished. It became statistically insignificant. What really mattered, what strongly predicted whether you recalled seeing the ad, was how long you spent looking at it at the dwell time. Get out. So the position might get you a quick glance, maybe influence that initial bit of attention. Exactly. But it's the sustained attention, how long you actually engage with the ad visually, that determines if it sticks in your memory. That's what the data strongly suggests. It's not just about being seen, it's about being looked at. That dwell time measure seems to capture a much deeper level of processing that leads to recall. That really changes how you might think about ad placement versus ad creative, doesn't it? It's about holding attention, not just getting seen first. Absolutely. It puts the focus squarely on engagement at the post level. And this is where Dicey really shines, by providing that granular behavioral data. It opens up so many doors for future research now. Dicey is this great middle ground tool. You get the control of an experiment, but in a much more realistic setting. So researchers can now ask different kinds of questions. Yes, much more nuanced questions. Like, how does influencer marketing really compete against standard ads in the same feed? How does seeing misinformation affect how you react to a brand message nearby? You could even combine Dicey with things like eye tracking for an even more detailed look at visual attention patterns. It's really versatile. It definitely sounds powerful for researchers, but let's bring it back to the people managing the marketing budgets, the practitioners. What does this mean for them? Does Dicey offer practical advantages? That's a critical question, and the authors actually talked to marketing professionals to get their take. 3 main themes really stood out about Dicey's potential value for them. First was transparency and control. Managers like the idea of getting back some control over the data, understanding the why behind campaign performance, not just the what. They often feel, that the platform's A/B testing is a bit opaque. You get top-line results, but not the deep insights into user characteristics or the reasons for success or failure. Dicey could offer that clarity.
Okay, so better understanding, less black box. What else? Second, they saw it as a safe sandbox environment, a place to test things out without risk. Think about pre-testing a big, expensive social media campaign. With Dicey, you could test different creatives, different contexts, and see how users react before you launch it to millions of people, and potentially risk brand damage if something goes wrong. It's like a rehearsal space. That makes a lot of sense. A way to de-risk campaigns. And the third theme? Third was systematic campaign evaluation. Using Dicey could help them really fine-tune their marketing materials, understand what elements are driving success, what's capturing attention, what's leading to better brand attitudes or recall, and potentially find insights that work across different platforms, not just isolated to one platform's testing environment. It gives a more holistic view than just relying on surveys or platform metrics alone. So it seems like Dicey isn't just an academic tool. It genuinely empowers both sides. Researchers can dig deeper and marketers can make more informed, smarter decisions. And it all comes back to better understanding your experience as you navigate that incredibly busy, dynamic social media feed. Exactly. It really helps bridge that gap between rigorous research and real-world impact. It's a significant development. We've really covered how these digital in-context experiments, Dicey, offer this vital new perspective for grasping the complex world of social media behavior. By creating these realistic, scrollable feeds, and especially by tracking attention through dwell time, it connects the dots between controlled lab work and the, let's face it, messy reality of scrolling online. This leap forward helps us understand not just what you might see, but how you genuinely engage with it, how you process it, and what actually sticks in your memory in that constant battle for your attention. It's about getting closer to the actual user experience. So, here's something to think about next time you're scrolling, maybe later tonight. Those algorithms, they are constantly working, trying to keep you engaged, right? But consider this. What if the very things designed to grab your attention, maybe something a bit controversial, maybe just a really well-placed ad, what if those things are also subtly changing how you feel about the brands trying to connect with you in that exact same digital space? It brings up a really interesting question, doesn't it? For the platforms, for the advertisers, is there a point where pushing for maximum engagement starts to clash with making sure the environment is actually safe and positive for you, the person using it? Where does that balance lie? That's definitely food for thought. We really hope this conversation has piqued your interest. And remember, you can dive much deeper by reading the full article by Roggenkamp, Johannes Bogershausen, and Christian Hildebrand. It's in the Journal of Marketing. We've put the link right there in the show notes for you. If you have the time, do check it out. We found it incredibly insightful, and we think you will too. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, স্ট্যানলি কুব্রিকের ওই সিনেমাটার কথা মনে আছে? 2001 স্পেস অডিসি। সেই যে স্পেস স্টেশনের কম্পিউটার হ্যাল 9000, সে তার ক্যাপ্টেনকে স্টেশনে ঢুকতে দিচ্ছিল না, বলছিল, আমি দুঃখিত ডেভ, আমি এটা করতে পারবো না। কেন? কারণ ওর মনে হয়েছিল ক্যাপ্টেনের কাজটা ওর নিজের মিশনের ধারণার সাথে মিলছে না। মানে সেই মুহূর্তেই বোঝা গিয়েছিল মানুষ তার নিজের বানানো যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সেটা না হয় কল্পবিজ্ঞান ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু আজকের দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই নিয়ে কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলো, সম্পর্কের প্রশ্নগুলো, এগুলো বেশ বাস্তব হয়ে উঠছে। ভাবুন তো, যখন একটা যন্ত্র আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করবে, তখন ওকে ম্যানেজ করবেন কিভাবে? এই নিয়েই চমৎকার একটা গবেষণা বেরিয়েছে খুব নামকরা একটা জার্নালে, জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় দুনিয়ার সেরা 50টা জার্নালের একটা, মানে FT50 লিস্টেড। আর এই দারুণ কাজটা করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস লাওয়েলের দুজন গবেষক, বেথ কে হামবার্ড আর স্কট এফ লেথাম। আমরা তো এখানে এটা নিয়ে আলোচনা করছি, কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, যদি সময় করে উঠতে পারেন মূল আর্টিকেলটা একবার পড়ে দেখার চেষ্টা করবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। খুবই গভীর চিন্তা ভাবনা করে লেখা আর খুব যত্ন নিয়ে পিয়ার রিভিউ করা একটা কাজ। বিশেষ করে যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য আমার মনে হয় খুব কাজে দেবে। এই গবেষণাটা পড়লে জানেন তো, সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, যখন প্রথম পেশাদার ম্যানেজাররা এলেন আর কোম্পানির মালিকদের ব্যবসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা অন্যদের হাতে ছেড়ে দিতে হলো।
সেখান থেকেই তো এই এজেন্সি থিওরি মানে প্রতিনিধি তত্ত্বের জন্ম, তাই না? ঠিক তাই। আর এই আর্টিকেলটা ঠিক সেই তত্ত্বটাকেই এআইয়ের ক্ষেত্রে এনে ফেলেছে, মানে একটা দারুণ প্রশ্ন তুলেছে। যখন এআই শুধু সাধারণ কাজ করবে না, ধরুন নিজে নিজে শিখবে, নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে, তখন সে তো একরকম প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হয়ে উঠছে। কিন্তু এই এজেন্ট তো আর মানুষ নয়, তাই না? একটা যন্ত্র। তাহলে এই যন্ত্রকে আপনি কিভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সাথে একসুরে বেঁধে রাখবেন? এটাই হলো আসল প্রশ্ন। যারা আমাদের শুনছেন আর হয়তো এবার গবেষণা বা তত্ত্বের সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন, তাদের জন্য যদি একটু সহজ করে বলি, এজেন্সি থিওরি আসলে কি নিয়ে? এটা মূলত প্রতিষ্ঠানের মালিক মানে প্রিন্সিপাল আর তার হয়ে যারা কাজ করে মানে এজেন্ট, যেমন ধরুন ম্যানেজার, তাদের সম্পর্কটা দেখে। ঠিক। সমস্যাটা হয় কখন? যখন দুজনের লক্ষ্য হয়তো দুদিকে যায়, বা ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে তাদের মানসিকতা আলাদা, অথবা ধরুন তথ্যের অসামঞ্জস্য থাকে, মানে এজেন্ট হয়তো এমন কিছু জানে বা বোঝে যা মালিক জানে না। আর এআই যখন এজেন্ট হবে, এই সমস্যাগুলো কিন্তু আরও জটিল, আরও অন্যরকম চেহারা নিতে পারে। যেমন ধরুন তথ্যের অসামঞ্জস্যতার ব্যাপারটা। একটা এআই হয়তো এত বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যা একজন মানুষের পক্ষে বোঝা বা ঠিকঠাক যাচাই করাই কঠিন। ঠিক। আবার ধরুন ঝুঁকির ব্যাপারটা। এআই হয়তো শুধু ডেটা দেখে একটা চরম যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু সেটা হয়তো নৈতিকভাবে ঠিক না, বা হয়তো সেটা কোম্পানির যে মূল উদ্দেশ্য তার থেকে সরে গেল। ওর তো আর মানুষের মতো আবেগ বা নৈতিক বিচার বুদ্ধি সেভাবে নেই, মানে যেভাবে আমরা বুঝি। লেখকরা কিন্তু এআই এর একটা সম্ভাব্য বিবর্তনের কথাও বলেছেন, তাই না? মানে একদম সাধারণ এআই থেকে শুরু করে। হ্যাঁ, তারা একটা যাত্রার কথা বলেছেন। একদম শুরুতে রুটিন এআই, যা শুধু নির্দিষ্ট কাজ করে। তারপর আসছে মেশিন এআই, যেটা ডেটা থেকে শিখতে পারে। তারপর জেনারেটিভ এআই, যা আমরা এখন দেখছি, মানে নিজে থেকেই নতুন কিছু তৈরি করতে পারে, লেখা, ছবি, এইসব। এর পরের ধাপটা হলো এজেন্টিক এআই। এই পর্যায়ে এআই সত্যিকারের এজেন্ট হয়ে উঠছে, যার নিজস্ব লক্ষ্য তৈরি হতে পারে, নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আসতে পারে, আর শেষে তারা সেনশিয়েন্ট এআই মানে চেতনা সম্পন্ন এআই এর সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। কিন্তু এই এজেন্টিক এআই পর্যায় থেকেই কিন্তু এজেন্সি সমস্যাটা বেশ বড় হয়ে দেখা দেওয়ার কথা। আচ্ছা, তার মানে পুরনো দিনের যে ম্যানেজারদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি, যেমন ধরুন বোর্ড মিটিংয়ে নজরদারি করা বা স্টক অপশন দিয়ে উৎসাহিত করা, হ্যাঁ, ওগুলো তো এআই এর ক্ষেত্রে কাজ করবে না। একটা এআইকে তো আর স্টক অপশন দিয়ে লাভ নেই। ঠিক। তাই লেখকরা এআই এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন। নজরদারির জন্য তারা বলছেন কয়েকটা জিনিসের কথা। যাচাইকরণ বা ভেরিফিকেশন, মানে এআই যা বলছে বা করছে সেটা ঠিক কিনা তা দেখা। পরীক্ষা বা এক্সামিনেশন, মানে এআই সিস্টেমটাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে টেস্ট করে দেখা। সহযোগিতা বা কোঅপারেশন, যেখানে মানুষ আর এআই মিলেমিশে কাজ করবে। আর স্বচ্ছতা বা ট্রান্সপারেন্সি, মানে এআই কিভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটা যাতে বোঝা যায়। আর উৎসাহিত করার জন্য কি, মানে এআইকে ঠিক পথে চালাতে প্রণোদনাটা কি হবে? প্রণোদনা হিসেবে দুটো প্রধান জিনিসের কথা বলা হয়েছে। একটা হলো রিইনফোর্সমেন্ট, মানে এআই যদি ঠিক কাজ করে বা লক্ষ্যের দিকে এগোয়, তাহলে সিস্টেমে ওকে কোনোভাবে পুরস্কৃত করা। সেটা হতে পারে আরও ভালো ডেটা বা রিসোর্সে অ্যাক্সেস দেয়া। আচ্ছা। আর দ্বিতীয়টা হলো রিসোর্স প্রভিশন, মানে ভালো পারফর্ম করলে এআইকে তার কাজ করার জন্য যা দরকার, যেমন ধরুন কম্পিউটিং পাওয়ার বা ডেটা, সেগুলো বেশি করে দেওয়া। মানে মূল লক্ষ্য একটাই, এআই এজেন্ট যেন প্রতিষ্ঠানের যে বৃহত্তর লক্ষ্য সেটার সাথেই জুড়ে থাকে। ব্যাপারটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ এআই তো মানে দেখতে দেখতে আমাদের কাজের জগতে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ছে। এটা শুধু একটা নতুন প্রযুক্তি নয়, তাই না? এটা যেন এক নতুন ধরনের সাংগঠনিক সত্তা হয়ে উঠছে, যার নিজের এজেন্সি, নিজের ক্রিয়াশীলতা তৈরি হতে পারে। একদম। আর এই গবেষণাটা সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অনেকগুলো জরুরি প্রশ্ন তুলে দেয়, যেমন মানুষ আর এআই ঠিক কিভাবে একসাথে কাজ করবে। যখন এআই নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করবে, তখন আমাদের মানে মানুষের ভূমিকাটা ঠিক কী দাঁড়াবে। আমাদের এতদিনকার যে ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলো, যেমন এই এজেন্সি থিওরি, এগুলো কি বদলে যাবে,
নাকি নতুন করে ভাবতে হবে? তাহলে সবশেষে একটা ভাবনা উস্কে দেওয়া যাক, কি বলেন? যখন এআই এতটাই উন্নত হবে যে সে হয়তো নিজেই নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে শিখবে, তার নিজস্ব যুক্তি বা যেটাকে আমরা স্বার্থ বলি সেরকম কিছু তৈরি হবে, তখন কি আমরা তাকে আসলেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো? নাকি আমাদের তখন ওর সাথে কাজ করার জন্য, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সম্পূর্ণ নতুন কোনো পথ খুঁজে নিতে হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা কিন্তু এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है सोशल मीडिया पर हम स्क्रॉल करते हैं और मान लीजिए किसी एयरलाइन जैसे KLM का ऐड दिखता है और वो ऐड ब्राजील में आई बाढ़ की किसी दुखद खबर के ठीक पास में हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग उस एयरलाइन के बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचने लगे? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। और ये सवाल अब सिर्फ सोचने भर के नहीं रहे। मतलब शोधकर्ता अब इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अच्छा, कहाँ पर? ये स्टडी आई है जर्नल ऑफ मार्केटिंग में। ये मार्केटिंग फील्ड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है, मतलब FT50 और UTD24 लिस्ट में शामिल है। ओह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस अध्ययन में कुछ खास है? बिल्कुल। ये सोशल मीडिया पर उपभोक्ता व्यवहार को समझने का एक नया तरीका, एक नया नजरिया पेश करता है। अच्छा, इसके लेखक कौन है, जानना चाहेंगे हम? हाँ, इसके लेखक हैं हॉके रोगनकैम्प। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड से हैं। ओके। योहानेस बॉयगर्सहाउजन, रॉटरडैम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम, नीदरलैंड से। और क्रिश्चियन हिल्डेब्रैंड, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड से हैं। अच्छा, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता, चाहे वो इस चैनल के सदस्य हों या नहीं, इस लेख को जरूर पढ़ें। ये बहुत विचारशील और बारीकी से रिव्यू किया गया है। हाँ बिल्कुल, लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है। और ये चर्चा मुझे लगता है खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं। हाँ, जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया व्यवहार का अध्ययन कैसे हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है। सही कहा। तो शुरू करें कि पहले क्या दिक्कतें थीं परंपरागत तरीकों में। हाँ बताइए, पहले कैसे स्टडी करते थे इसे? तो देखिए, एक तरीका था वाइनेट आधारित प्रयोग। वाइनेट मतलब एक छोटा सा स्निपेट, जैसे स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल। अक्सर एक अकेली पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाता था। लेकिन सोचिए, हम असल में ऐसे तो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। नहीं, हम तो लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, एक पोस्ट के बाद दूसरी, फिर तीसरी। एग्जैक्टली। तो वो स्क्रीनशॉट वाला तरीका उतना स्वाभाविक नहीं था। उसकी पारिस्थितिक वैधता, मतलब इकोलॉजिकल वैलिडिटी, थोड़ी कम थी। वो असल दुनिया के बर्ताव को शायद ठीक से ना पकड़ पाए। समझ गया। और दूसरा तरीका? फील्ड स्टडीज, जैसे A/B टेस्टिंग वगैरह। हाँ। फील्ड स्टडीज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर A/B टेस्टिंग, या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जिसमें मौजूदा डेटा को खंगाला जाता है। उसमें क्या चुनौती थी? उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी नियंत्रण की कमी। मतलब शोधकर्ता ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे कि कौन सा व्यक्ति क्या कंटेंट देख रहा है। अच्छा, वो तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम तय करता है। बिल्कुल, एल्गोरिदम तय करता है कि किसकी फीड में क्या दिखेगा। तो जब आप नतीजों को देखते हैं तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल हो जाता है कि असर किस वजह से हुआ। क्या वो वाकई आपके विज्ञापन या पोस्ट की वजह से था, या एल्गोरिदम की किसी और खेल की वजह से। हाँ, यानी आंतरिक वैधता पर सवाल उठ सकता था। समझ गया। तो एक तरफ स्वाभाविकता की कमी, दूसरी तरफ नियंत्रण की कमी। सही। इसी फासले को भरने के लिए ये नया तरीका आया है, DICE। DICE, ये क्या है? DICE यानी डिजिटल इन कॉन्टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। ये एक नया एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम है, एक नया ढांचा कह सकते हैं। ओके। और ये करता क्या है? ये शोधकर्ताओं को पूरी की पूरी सोशल मीडिया फीड बनाने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा देता है। बिल्कुल वैसी फीड जैसा हम असल में स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। ओह, तो मतलब अब सिर्फ एक अकेली पोस्ट नहीं, बल्कि पूरी फीड की बनावट, उसमें पोस्ट का क्रम, ये सब स्टडी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे आप कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट्स देख सकते हैं, मतलब आसपास की पोस्ट्स का किसी खास पोस्ट पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे वो KLM वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल। और साथ ही स्पिलओवर इफेक्ट्स भी, यानी एक पोस्ट का असर उसके बाद दिखने वाली पोस्ट पर कैसे जा रहा है। ये तो काफी दिलचस्प है। और कुछ? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, डाइस प्रतिभागी के व्यवहार को बहुत बारीकी से ट्रैक करता है। जैसे वो हर पोस्ट पर कितनी देर रुके,
कितनी देर रुके, मतलब सिर्फ देखा या क्लिक किया ये नहीं, बल्कि कितनी देर तक नजर टिकाई। हाँ, इसे कहते हैं ड्वेल टाइम। ये असल में ध्यान को, अटेंशन को समझने में बहुत मदद करता है। ड्वेल टाइम, ये शब्द जरूर याद रखना होगा। ये तो वाकई अहम लगता है। क्या लेख में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ये काम कैसे करता है? हाँ, लेख में 2 केस स्टडीज भी दी गई हैं। पहली तो वही KLM वाली, जिसे उन्होंने ब्रांड सेफ्टी स्टडी कहा है। हाँ, बताइए उसके बारे में। उसमें यही पाया गया कि जब KLM एयरलाइन का विज्ञापन ब्राजील में आई बाढ़ की नेगेटिव खबरों के साथ दिखाया गया, तो लोगों का ब्रांड के प्रति रवैया ज्यादा नकारात्मक हो गया। अच्छा। और खास तौर पर उन लोगों का रवैया ज्यादा नेगेटिव हुआ जिन्होंने उस विज्ञापन पर ज्यादा ड्वेल टाइम बिताया था, मतलब जिन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। ओह, तो मतलब संदर्भ और ध्यान दोनों का मिला जुला असर था। ये तो ब्रांड्स के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। और दूसरी स्टडी? हाँ, दूसरी स्टडी किस बारे में थी? दूसरी स्टडी थी विज्ञापनों की पोजीशन को लेकर, मतलब फीड में वो कहाँ दिखते हैं, ऊपर या नीचे। अच्छा, इसका क्या नतीजा निकला? नतीजा ये था कि जो विज्ञापन फीड में ऊपर दिखते हैं उन्हें लोग ज्यादा याद रखते हैं। ये तो खैर अपेक्षित था। हाँ, ये तो कॉमन सेंस लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजबूत प्रेडिक्टर, मतलब भविष्यवाणी करने वाला कारक याद रखने का, वो था ड्वेल टाइम। मतलब पोजीशन से भी ज्यादा? हाँ, विज्ञापन पर बिताया गया समय, ड्वेल टाइम, इस बात का ज्यादा अच्छा संकेतक था कि वो विज्ञापन याद रहेगा या नहीं, बजाय इसके कि वो फीड में कहाँ दिखा था, ऊपर या नीचे। वाह, ये तो कमाल है। यानी सिर्फ दिखना काफी नहीं, उस पर ध्यान जाना, नजर टिकना ज्यादा जरूरी है याद रखने के लिए। विज्ञापन बनाने वालों के लिए ये बहुत बड़ी इंसाइट है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या शोधकर्ताओं के लिए इस डाइस तरीके को इस्तेमाल करना आसान है? कहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं? लेखकों ने इस बात का भी ध्यान रखा है। उन्होंने एक ओपन सोर्स ऐप भी बनाया है, diceapp.org पर उपलब्ध है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, और उसमें एक नो कोड इंटरफेस है, मतलब आपको कोडिंग जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तकनीकी ज्ञान वाले शोधकर्ता भी आसानी से अपनी डाइस स्टडीज डिजाइन कर सकते हैं और चला सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे ज्यादा लोग इसे अपना पाएंगे। बिल्कुल। और अगर हम संक्षेप में कहें तो डाइस सोशल मीडिया शोध में वो जो नियंत्रण और यथार्थवाद के बीच का गैप था, उसे भरने में मदद करता है। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये समझना जरूरी है कि ये मौजूदा तरीकों का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका पूरक है, उनको और बेहतर बनाता है। सही। ये शोधकर्ताओं को ज्यादा बारीक और भरोसेमंद डेटा देता है, खासकर जब हम संदर्भ और ध्यान जैसी चीजों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम ये माप सकते हैं कि लोग हर पोस्ट पर कितने सेकंड बिता रहे हैं, ये ड्वेल टाइम, तो इसका असर सिर्फ विज्ञापनों को समझने से कहीं आगे कैसे जा सकता है। सोचिए, भविष्य में ऑनलाइन दुनिया में सामग्री कैसे डिजाइन की जाएगी, अगर लक्ष्य सिर्फ क्लिक पाना नहीं, बल्कि लोगों का वास्तविक ध्यान खींचना हो।